ब्यूटीफुल मैजिशियन। वाओ, Good आ गए। morning, लो, मैं आ ma'am. गई। Good Good morning. morning, गुड everyone. मॉर्निंग प्रिया। Good Good morning. Good morning. morning. मॉर्निंग Both are दीप्ति जी। magicians. Ma'am. सबको Good good morning. Good morning morning, जी. beta. Good morning. Very good morning. Good morning. It's nice and wintry, so this is the color of the weather. one of the most beautiful colors of the weather. है ना? Yes, yes, ma'am. बिल्कुल. Yeah. So today's day is money, money, money. So यहाँ पे money magnets हैं, money is raining on me, and money is yummy. My income is constantly increasing. Money always comes to me easily and Only effortlessly. sixth element. Yes, all this is money. So today's chapter is the magic check, as in कोई भी वो चीज that you desire most right now, उसको manifest करना by writing a magic check. So that's what it's about. But I feel that money को जैसे ही love देने लग जाते हैं ना, money starts pouring in it. So money is raining on me. This is what we have to be thinking, saying, and being in that frequency. बिकॉज अगेन मैजिक चेक प्रैक्टिस रियलाइज तभी होती है जब पूरे दिन मनी के साथ हमारा इंटरनल टॉक बहुत ज्यादा लव वाली होती है. That internal talk that we have, it should not be that I don't have money, I can't do this, I can't do that. So that way. So let's just get reading this chapter, the magic check. And Unnati from Mumbai will be reading for us. And we'll Yes, just ma'am. go through this. We'll just go through this image. Image इसकी बहुत relevant है. As in like this is a check जो हम भरेंगे आज. और उस पे स्टैम्प है ग्रैटिट्यूड की. सो वो जो स्टैम्प पड़ा है दैट्स अ ग्रैटिट्यूड का स्टैम्प. ये सारे बही खाते इसलिए पड़े हुए हैं, बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट वी हैव टू सम अप एज टू हाउ मच मनी वी नीड फॉर सम पर्टिकुलर थिंग. It could be for anything. Suppose you want to go for a vacation to Europe with your family. So you have to just kind of add up how much money you want total, like आने जाने के पैसे, वहां पे कौन से होटल में रहने हैं उसके पैसे, फिर वहां पे साइट सीइंग के लिए कितने पैसे चाहिए, और उसके अलावा जो खाने पीने के लिए कितना पैसा चाहिए. And with all of that, like calculate कितना total पैसा है and then fill it up. And उसमें टेलीफोन वो पुराने जमाने वाला बना हुआ है, नंबर्स वाला जो फोन होता था, which means you have to write the exact number. I mean number for something that you most want right now. So that is what it, because ये number signify करता है ये पुराने वाला फोन जो होता है. So that means if you actually add up everything और आपको लगता है okay 4,20,000 rupees. So write down 4,20,000 rupees in that. So this is what this image signifies. And तरीके से अगर ये प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसके साथ में पूरे दिन मनी के साथ फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशनशिप एंड सेल्फ टॉक अच्छा होता है, सो ये मैजिक चेक बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है. हाँ जी, उन्नति, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Yes. Good morning, everybody. We are reading chapter number 17, day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, writer and poet. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more.
The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you're doing the very thing that brings more money to you. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you're about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does the circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. If you tell a friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you're planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely, you have experienced some of these situations in the past. And whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You'll feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so
I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. And I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful. So I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the Gratitude Bank of the Universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you're going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank checks from the Secret TV Magic Check Dot. If you want, you can start with a similar amount on your first magic check. And after you Unnati, receive, read again if you want. if you Carefully. want, you can start with a smaller amount of your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account, and feel as happy and grateful as you've really received it. After you've completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it.
If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you've received the money and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. Magic practice number 17, the magic check. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Number 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat steps 2 to 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Unnati. Such a childlike voice you have. After Thank you. having met you, itni lambi si ladki hai, you know, like super tall and this, and you know, your voice is like a little baby. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for reading. Thoda super fast tha, but you read beautifully. Next time, thoda slow. Sure, ma'am. Sure. Yeah. So this is about the third chapter about the money. The first chapter was the magic money. And then second chapter was the money magnet. So magic money में हमने बचपन से अभी तक जो पैसा खर्च किया, we were very, very grateful for the past, you know, basically for everyone who had spent money on us. कौन सी चीज हमने shampoos, conditioners, soap, face wash, school की fees, university की fees, the shoes, the dresses, you know, the gifts, etc., that we have all received, you know, like throughout our life. That was the first chapter. And then we were very, very grateful. And we had made a small parchi which said that thank you for all the money, you know, I have received throughout my life. So that means the past was done. We keep thinking about the past, you know, and feel very, very grateful. So that continues, you know, like that chapters, not that वो assignment कर लिया और वो हो गया, because वो relationship with money तभी improve होता है, because we have had arguments about money in the house. You know, sometime किसी ने ले लिया, ज़्यादा खर्च कर लिया. There have been worrying thoughts, disturbing thoughts. We have been anxious about the money in the past. So, you know, like the Lakshmi Devi loves appreciation. Okay, so we've done that. We've said thank you for the past. And then came the money magnet chapter. The money magnet chapter is extremely crucial because it decides your frequency when you're giving out the money.
जब भी हम पैसा खर्च करते हैं, whether we are giving it to our drivers, domestic helpers, buying some fruits, vegetables, groceries, a movie ticket, a flight ticket, or wherever, whenever we give money for something, we have to be extremely grateful for the money, that thank you that I have the money to pay, and feel very, very grateful and bless that money and give it to people. Once those two practices have gone into your DNA and in your subconscious mind, that अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जब आपको पता है दैट मैं कोई भी पैसा देती हूँ तो मैं ग्रज में, अगर आपका मूड ठीक नहीं है किसी दिन, सपोज आपके घर प्लम्बर आया है एंड ही इज जस्ट फिक्स सम फॉसेट, और उस प्लम्बर को आप पैसे दे रहे हो एंड सडनली वो बोलता है कि मैम 2,000 रुपए हो गए, और आपको लगा था कि छोटा सा काम है, द टैप वॉल्व इज लीकिंग, सो उसके लिए ये इतना ज्यादा पैसा ही इज आस्किंग. सो ऑब्वियसली फॉर अ मोमेंट आपको गुस्सा आता है कि वाई इज ही आस्किंग मी और ओवर चार्जिंग मी और समथिंग, दैट्स व्हाट यू फील. सो जब भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, प्लीज फ्रीक्वेंसी चेंज करके पैसे देना, बिकॉज ऑफ दैट 2,000. एंड इफ यू वांट टू बार्गेन, यू कैन बार्गेन. बार्गेनिंग इज नॉट बैड. Okay, like if you want to bargain, it is all right. Ideally, I would say that don't bargain, because in fact, मुझसे कोई 2,000 बोलता है तो I always give 24, or like wherever I go, I exclusively tip, even when I'm with a group of friends, you always leave a tip behind, without not, like no one knows about it, without anyone knowing that I have tipped that person. So I always do with all my cabs, because I'm a globe trotter. So it's like whenever I pay for the cab, if I'm jeeping something or I'm giving in cash, I always give extra. Like, even if I have like just 1,200 rupees in my pocket, if the cab says it is 900 rupees, I will give him 1,000. So that's very, very clear. Because of that, the money has been increasing constantly. So that's money magnet. Okay, money magnet we become only when we have a positive energy while paying out the money or paying out any bill. And if you're paying any bill of the house, you have to be extremely grateful for the services that you have availed. Like if you're giving it for electricity, the services that you have availed because of electricity being there in your house. So you have to think, about all those beautiful things that you can do. So wo money magnet. Having done those two chapters and constantly doing, because money magnet chapter, like paying money, I think we are spending every day, we spend for something or the other. And sometimes for the cab, sometimes we are buying things for the house, sometimes we are just buying, vegetables or whatever, milk. So for all those things, so it's a daily practice that we need to ingrain into our lives कि जब भी हम पैसा दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए खर्चा कर रहे हैं, छोटा सा भी, अगर आप प्रेस वालों के भी मतलब पैसा दे रहे हो, प्रेस के कपड़े जो आते हैं उसके लिए भी पैसा दे रहे हो, तो उस पैसे को इतना ब्लेस करके दो, इतना ब्लेस करके दो कि जिसके भी घर में ये पैसा जा रहा है, उनके घर में बहुत बरकत आएगी, और ये पैसा विल बी द like impetus for more money in their house, and wish this person a lot of prosperity. So ये सारा कर लिया, उसके बाद फिर मनी मैग्नेट चैप्टर होता है. अगर आपका सॉरी ये मैजिक चेक. सो अगर मैजिक चेक इफ इट इज नॉट रियलाइजिंग, या मतलब वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है आपका और आपने बहुत सारे चेक्स बनाए, इसका मतलब है मनी फ्रीक्वेंसी को अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. Then take the support of affirmations. Okay, that I am a money magnet, I love money, money loves me. Okay, so those kind of affirmations one needs to keep doing also, so that the subconscious mind, जिसमें अभी negative situation created है पैसे को लेके, लैक की मेंटालिटी हो सकता है होगी, कभी बचपन में हमने बहुत ज्यादा मनी को लेके आर्ग्यूमेंट्स अगर सुने होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डीपली एनग्रेव हो जाते हैं. देन उस सिचुएशन को हटाने के लिए आपको नई सिचुएशन इम्प्लांट करनी पड़ती है. जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पूरा रॉन्डा बर्न ने ये एक्सप्लेन किया है that to eliminate the old condition, you have to put in the new condition. The old condition gets eliminated, and which is called neuroplasticity. It's a science. So when you constantly keep implanting the new situation, thank you for the money, money easily and effortlessly comes into my life, I really enjoy money, I love you money, I love, why do you want more money, that has to be strong. So then the magic check will come. इसीलिए मैं अभी magic check practice में आ ही नहीं रही हूँ, मुझे पता है कि वो कई बार realize नहीं होता. So I'm just giving you the reasons and the tools how you can very quickly manifest it.
Okay, so work on that money frequency. Take the support of affirmations. And even if it is kharcha, see, nothing happens in your life without a reason. There is a higher purpose, there is a higher reason for it. ठीक है, अगर पैसा जा भी रहा है ना, उसका कोई रीजन है. अगर पैसा आ भी रहा है, उसका रीजन होता है. ठीक है, so it is just all right for the money to be overspent. It is all right that you don't have enough money right now. It will come. These tests of time will keep coming. Okay, so what your attitude is in this time, in this situation जहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम हो रहा है और आपको लग रहा है कि you have to pay the bills and you don't have enough money. So you just have to work on your frequency, because the subconscious mind is planning all the time. It is planning according to your vibrational frequency. If your vibrational frequency is positive, you will just wait for amazing things to happen in your life. But if your vibrational frequency is negative, that also subconscious mind is planning all the time. So all the time it is planning. The next moment is happening according to this moment. Okay, so this is a very powerful. So this is the reason why our days and our lives are changing so fast, is because we spend 1 hour just talking good, talking higher self, talking about subconscious mind, talking about gratitude and love, and then the hero's journey. Okay, so 1 hour we are giving to that, where 17 seconds make so much of a difference. You can imagine that 1 hour, if you stay in that frequency, that itself is going to change your life. And that too at a time when the sunrise has not happened, Abhi. The sun is still coming around, at least in India. Okay, for other countries who are towards the west, sun has already come. But then, yeah, I mean, like, sorry, in the east. In the east, the countries are there, the sun has already come. And that's how it actually goes forward. But, like, work on the frequency of the feelings. Maybe sometimes you still forget while paying the money. एकदम से आप Google Pay कर देते हो, Paytm कर देते हो, या किसी को चेक दे दिया, या किसी को कुछ दे दिया, या ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं without saturating gratitude into it. Okay, so this is one practice. Work on chapter number 9 and chapter number 5. That's very important. 5 is the magic money. Always, whenever you get time, start being grateful for all the money, that has led you to where you are today. मतलब आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं, कितना हमारे पीछे आई थिंक करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे बचपन से लेके अभी तक. तो उसको पिक कर करके थैंक यू बोलना. और पैसे खर्च, और पैसे हम रोज काफी खर्च करते हैं, ऑल ऑफ अस, है ना. लगातार घर में कोई चीज चाहिए होती है, बिल्स पे करना होता है, कभी फोन का बिल करना होता है, कभी किसी रिपेयर के लिए पैसे देने पड़ते हैं. So all of that at that point of time, please be in a very, very high frequency, because वो decide करेगा कि आपके पास पैसा कैसे आएगा. And then after having done that, अगर वो आदत पड़ गई, अब जो मैजिक चेक हम बना रहे हैं, इसमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और लगातार. So this check can be your ordinary check. It doesn't always have to be from the secret.tv.check. आप नॉर्मल अपना जो बैंक अकाउंट का, जो भी आपका ICICI का बैंक अकाउंट है, या जो भी है, सेंचुरियन बैंक और दिस बैंक, व्हाटएवर, आप उसकी चेकबुक लीफ लीजिए. उसमें 2 में आप अपना नाम लिखो. ठीक है, उसके बाद अमाउंट में आपको, दिस इज नॉट अमाउंट का मैनिफेस्टेशन, दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू बाय विद अमाउंट का मैनिफेस्टेशन. ये जो मैजिक चेक है, सो वी हैव टू गेट द प्रैक्टिस राइट. इट इज नॉट लाइक आपको ऐसे लग रहा है कि अभी 2 लाख रुपए आ जाए तो आप 2 लाख रुपए लिख दो, है ना. ये वो नहीं है. स्पेसिफिकली जिस चीज के लिए आपको ये पैसा चाहिए, अगर आपको टैब खरीदना है उसके लिए पैसा, आपको कोई कोर्स खरीदना है उसके लिए पैसा. ठीक है, सो अंतिम, अगर आप अभी हो तो दिस इज फॉर यू, बिकॉज जो क्वेश्चन आपने पूछा था, तो अगर उसके लिए, तो उस चेक पे वो वाला आप अमाउंट लिख दो, जितना भी है, 88,670 रुपीज, है ना, जो कोर्स फी है. और फिर चेक पे वो भरा हमने जो अमाउंट है. फिर उसके बाद एंड में जहां पे आपके साइन होते हैं चेकबुक पे, उस जगह पे द यूनिवर्स. ओके, और आज की डेट होनी चाहिए ऊपर. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और चाहो, जैसे आई ऑलवेज राइट चेक के पीछे कि ये मुझे किस चीज के लिए चाहिए, लाइक किस चीज के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है पिछला चेक रियलाइज नहीं हुआ हो, तो लेकिन उस चेक के लिए तो मैंने कुछ और के लिए मांगा था. तो इस चेक के पीछे यू हैव टू राइट जिस भी चीज के लिए. यू कैन राइट इफ यू वांट. इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस, बट आई ऑलवेज राइट.
क्योंकि अभी हर महीने हम एक चेक बनाते हैं ना, तो हो सकता है कि पिछला वाला चेक अभी रियलाइज नहीं हुआ हो या जो भी है, मतलब जिस चीज के लिए, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट वो चीज आपके पास या तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती है, ठीक है, या कोई गिफ्ट कर देता है, और you receive the money for it. Anything can happen because it is that thing that you really want, so that your feelings towards that thing is very, very, too much with love. So जो भी चीज आपको चाहिए, आपको शूज लेने हैं, आपको कोर्स के पैसे चाहिए, आपको ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए अपने घर के लिए, you want to change your dining table, you want that money, or you want to change the draperies of the house and curtains or whatever, या आपको blinds लगाने हैं, या आपको बाथरूम का रेनोवेशन करना है, या आपको जो भी करना है, ठीक है, उस चीज से कोई नॉर्मल बैग खरीदना है आपको, आपको एक एलवी खरीदना है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, सो अगर आपने ये पहले प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं की है, तो कोई स्मॉलर अमाउंट के लिए, स्मॉलर अमाउंट के साथ करो जिससे रेजिस्टेंस कम हो, है ना, बिकॉज छोटे अमाउंट के लिए करोगे तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा, उससे आपको बिलीव बन जाएगी दैट येस देयर इज ऑलवेज सम फोर्स विच इज सराउंडिंग मी, लीडिंग मी, गाइडिंग मी, प्लेइंग विथ मी, हैविंग फन विथ मी, एंड ऑलवेज गिविंग मी द बेस्ट। ओके, दैट बिलीव इन द यूनिवर्सल फोर्सेस हैज टू बी देयर, है ना। अगर कोई हम पे लगातार शक करता रहता है, जैसे अगर कोई भी दो जने हैं, एक जना हमेशा दूसरे पे शक करता रहता है कि नहीं नहीं तो झूठ बोल रही है, नहीं नहीं दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, तो फिर उस फ्रेंड को कैसा लगेगा? अगर कोई मुझ पे लगातार शक कर रहा है, तो क्या मैं उस पर्सन के लिए कुछ करना चाहती हूँ? नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। मुझे ये लगेगा कि यार ये तो पूरे टाइम डाउट ही करती रहती है, शी इज कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग मी कि लाइक आई हैव डन दिस बट आई एम नॉट टेलिंग द ट्रुथ। उसी तरह से यूनिवर्स पे जब हम डाउट करते हैं तो इट डज नॉट डिलीवर इट्स बेस्ट। No one likes, universe is talking to us by energy and frequency. A doubt energy is a low frequency energy. So we don't have to get into that doubt. I mean, universe is magnanimous. अभी जब मिलेंगे ना करोड़ों रुपए तो पता लगेगा, तब थैंक यू निकलेगा हमारा यूनिवर्स के लिए। तो इसीलिए बहुत अच्छे जोन में, अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ उस चेक भरो अपना। सुबह सुबह की प्रैक्टिस है ये, मतलब वी हैव टू डू इट बिफोर 10 o'clock एनी टाइम। सो वो चेक अपना भर के, और फिर उसको दोनों हाथों से, उंगलियों से हाथ में पकड़ के इमेजिन कि आप वो चीज यूज कर रहे हो जो आपने उसमें अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे अगर आपने यूरोप हॉलिडे के लिए लिखा हुआ है, आप इमेजिन करो कि कितनी जॉयफुल फ्लाइट थी आपकी, आंख बंद करके इमेजिन करो कितनी जॉयफुल फ्लाइट थी, आप उस जगह पे पहुंचे जिस भी कंट्री में आपको जाना था, से स्पेन, इटली, वेरेवर, जहां पे भी आपने सोचा, या पेरिस एयरपोर्ट पे आप लैंड हुए, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स विच आर रिटन इन फ्रेंच देयर एंड यू नॉट एबल टू रीड, एंड देन बट इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देन सच अ नाइस ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, एज यू वॉकिंग वहां पे कौन कौन सी जगह पे गए, कितनी खुश हो रहे हैं, एंड इमेजिन रिटर्निंग विद अ लॉट ऑफ मोमेंट्स एंड मेमोरीज फ्रॉम देयर, दिस इज वॉट वी नीड टू काइंड ऑफ इमेजिन। सो इस तरह उसके बाद खूब सारा थैंक यू बोलो उस चेक के लिए, उस मनी के लिए जो उस यूरोप ट्रिप के लिए आपने मैनिफेस्ट किया था, बिकॉज यू क्रिएटेड इट, राइट। सो क्रिएशन हमेशा क्रिएटिव मोड में, हाई फ्रीक्वेंसी मोड में होती है। अगेन एंड अगेन आई कीप टेलिंग दैट हम कई बार सर्वाइवल मोड में होते हैं। सर्वाइवल मोड में क्रिएशन नहीं हो सकता। सर्वाइवल मोड होता है व्हेन देयर माइट बी स्लाइट समथिंग गोइंग ऑन इन द हेड, a concern, a worry, a fear, or doubt, or something like that, anxiousness. So anxiety jo hoti hai. So if that is going in the body, in the mind, which means you are in the survival mode. You can never create anything in the survival mode. Survival mode is fight and flight response. Your body is dealing with it. You are not, your land's not fertile. Okay, it is full of weeds. When the mind is full of weeds, है ना, जो जंगली प्लांट्स होते हैं, वीड्स, सो अगर माइंड वीड्स से भरा हुआ है तो आप कभी भी क्रिएशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड में जब हम होते हैं, पहले ही अपना डीप ब्रीथ करो, ठीक रहो, गो इनटू दैट फ्रीक्वेंसी, एंड देन यू आर इन द क्रिएशन मोड, एंड यू वांट टू क्रिएट द मनी व्हिच इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। Okay, it's a frequency of gratitude and love. Money will come only when you're constantly in gratitude and love. And when you made peace with where you are right now. So you have to make peace with where you're right now. There should be no anxiety.
Okay, there is so much, whatever it is that you want, it's already there in the parallel universe. है ना? According to all the books, it's already created, it's already there in the parallel universe. In Abraham Hicks language, it is there in your vortex. You just have to have it in your bank account. उसके लिए gratitude and love frequency में रहना जरूरी है. So constantly working on yourself is very, very important. Create that vibrational frequency in your own life. है ना? You will have to deliberately create it initially. If there is a worry kind of a thing that's happening, तो हमको चाहे हम झूठा लिखें, but हमको फिर भी thank you for all the money, thank you money, thank you money, thank you money, I love you money, thank you money, I love you money. जैसे एंग्जाइटी हो रही है, thank you money, I love you money, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है और उसी में रहना है. एंड प्लीज ये मंदिर मस्जिद में जाके जो आप बिजनेस करते हो गॉड के साथ, ये बिल्कुल नहीं करना है कि मेरा ये गोल पूरा हो जाएगा तो मैं इतने पैसे दूंगी. व्हाट बुलशिट इज दैट? आई मीन लाइक आई गिव फर्स्ट. नो, अगर इतना ज्यादा है पहले आप दो, इसका मतलब भरोसा हो गया. सो प्लीज वो जो धागा बांध के आ जाते हैं और वो बार्गेनिंग चलती है और बिजनेस डील्स चलती हैं भगवान के साथ भी, उनको भी नहीं छोड़ते हम लोग, है ना? गोइंग एंड टेलिंग दैट आई विल चढ़ाओ, यू नो, वंस दिस कम्स, मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं वहां पे इतना पैसा दूंगी, ये मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं ऐसे करूंगी. पहले दो. ठीक है? इन बुक्स ने यही सिखाया है, पहले करो ऐसा. बिल्कुल ये नहीं कि मेरे बच्चे का वहां एडमिशन हो जाएगा उस यूनिवर्सिटी में, तो दिस इज नॉट टू बी डन. प्लीज, आई मीन लाइक एटलीस्ट चेंज दैट माइंडसेट दैट देयर आल्सो बिजनेस एंड ब्लैकमेलिंग. आई मीन लाइक गोइंग टू द गॉड एंड सिंग, पहले दे दो ना. 1,000 रुपए आप खिला दो किसी को खाना. बहुत सारे भूखे बच्चे होते हैं, टेम्पल्स के सामने होते हैं, कई लोग होते हैं. आप गुरुद्वारे में जाके वैसे ही दे दीजिए. वहां पे कोई पूछता नहीं है कि 5 रुपए दिए आपने, कि आप यू आर ट्रीटेड इक्वल, यू नो. तो आप वहां पे कोई वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, इसका कोई प्रोविजन नहीं होता गुरुद्वारे में. द बेस्ट प्लेस टू एक्चुअली गो एंड give money for a very good cause, and everything is so transparent there. There is no, you're not a VIP and normal janta and a VVIP. In a gurudwara, nobody, everybody is the same. Whether somebody is a beggar, whether they pay 5 rupees, or whether somebody pays 1 lakh rupees, there you are equal. Okay, so you can go and give the money there. अगर ऐसा लग रहा है कि कोई मन्नत मांगने आए हो, प्लीज पहले पैसे दे दो. ठीक है? बिल्कुल यूनिवर्स डज नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ बिजनेस टैक्टिक्स दैट ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी फिर ऐसे होगा. इट्स सच अ लो फ्रीक्वेंसी थिंग टू डू, है ना? To never do business with God. I mean, like, that power is what has created this world, given us a human form, made us capable of doing everything possible, made us capable of eating everything possible, given us the best life, has always found a way out. ओके, उसके बाद भी ये जाके, मतलब उस फोर्स के साथ जो सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट है, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, उससे हम जाके बिजनेस करते हैं पैसे का. वेरी वेरी शेमफुल एक्ट टू डू. Okay, so we need to be very careful about these little things that we do, which are pulling the money away. So it is no, यूनिवर्स को आप थैंक यू बोल दो ना, वो बहुत है. आप किसी भी टेम्पल में जाओ, भगवान बहुत बड़े हैं हमसे. ठीक है? उनका वैसे भी 1,000 रुपए से कुछ होगा नहीं. ठीक है? बट दैट लिटिल एक्ट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड दैट जेस्चर ऑफ गिविंग मनी फॉर समथिंग, okay, that matters. That gesture, that heart, that frequency, the love with which you're paying. You have 1,200 rupees in your pocket, but you're giving 1,000 rupees. This will matter in the universal account. It's already a lakhs and crores of rupees have already got added at that moment. When you had 1,200, given 1,000 to someone for some higher reason, for some reason. So this is how frequency of the money is also kept through. This is the reason why sometimes the magic check doesn't come around. Okay, so we need to little bit improvise on our habits and not do all those things. I've always despised whenever anyone says that मैं वहां पे गई थी मन्नत मांगने के लिए. मन्नत मांग क्योंकि वो ये हो जाएगा, फिर मैं वापस वहां जाके इतने का चढ़ावा दूंगी. So I know that, like, I don't know what kind of a frequency is that doing a business in every temple. I don't go much to temples. Wherever there is VVIP and VIP and VIP,
I just went to Sai Baba's mandir in Shirdi, and I had told Sai Baba ji beforehand that Sai Baba ji, I'm not into Janta Darshan and semi VIP and VIP and VVIP. For you, I'm VVIP, and that is how I will go. I don't know what these people are saying, and I'm definitely not paying money to see you. Okay, because you are me and I'm you. All is one, one is we are God, God is one. So all that understanding, and it was very recently that I'd gone there. And well, out of the blue, one person appeared. I don't know, he disappeared after that. Very mystic experience I had. So बहुत अच्छे से, बहुत love, बहुत gratitude के साथ गई थी. अकेली थी because I was there for work, because शिरडी के पास नासिक है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है. तो I was on an official trip. So I stopped out. फ्लाइट शिरडी जाती है, वहां से नासिक के लिए आपको कैब लेनी पड़ती है. तो शिरडी ही लैंड की थी. सो और एक ही फ्लाइट जाती है तो शाम को, तो मैंने सोचा मैं शाम को आई डेफिनेटली गो टू दैट टेम्पल. एंड आई जस्ट एंटर्ड देयर. तो वहां पे देखा तो वो वही जनता दर्शन, दिस दर्शन, दैट दर्शन. मैं कहा साईं बाबा यार, मैं आपसे मिलने आई हूँ, प्लीज आई रियली वांट टू कम, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर यू हैड you've been there and you preached and all that. And I really want to see you, but I don't understand VIP and VVIP. Well, a person appeared out of nowhere, dressed in a cop's uniform, and he said, "Ma'am, आप हमारे साथ आइए उधर से." मैंने कहा ठीक है. Out of thousands of people, you know that you take an average time of 6 hours to get into Sai Baba ji's mandir. सो ही सेड आप मेरे साथ आइए. मैं चुपचाप वहां पे चली गई. बिल्कुल खाली एक बहुत बड़ा आंगन जैसा बना हुआ था. एंड देन ही सेड आप इधर से आ जाइए. फिर उसके बाद जहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर होता है, तो उसमें वो 2 रोज और बैरिकेड बने हुए हैं. एक वीआईपी दर्शन के होते हैं और एक जनता दर्शन के होते हैं. और बीच वाला एरिया उसी मंदिर के अंदर में, पीपल हु गॉन वुड नो, वो बिल्कुल खाली होता है. और उसके पीछे गेट लगा होता है. सो यू कैन एंटर वो बीच वाली जगह. सो दिस गाय जस्ट ओपन दैट गेट. I went, I was the only person there, and I did my darshan बड़े अच्छे से. मैंने that tete-a-tete with साईं बाबा, जो अपने internal talk की, वो किया. फिर मैं वापस आ गई. वापस से मैंने वो गेट खोला बाहर आने के लिए, तो वहां पे 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे. तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब वीवीआईपी दर्शन बहुत एक्सपेंसिव है वहां पे. तो मैंने सोचा, मैंने फिर 500 रुपीज निकाले अपने पॉकेट से, कि मैं उन भैया जो मुझे आउट ऑफ द वे 2 मिनट में ले आए, जहां पे मुझे 6 घंटे लग जाते, तो अब मैं उनको ही 500 रुपीज दे देती हूँ. और मैंने अपने वॉलेट से वो हाथ में निकाल के अपने पॉकेट में रख लिए थे. पीछे मुड़ के देखा तो मैंने पूछा कि वो कॉप वाले भैया जो मुझे अभी यहाँ छोड़ के गए थे कहाँ है, बिकॉज आई barely took some 3 minutes देयर इन फ्रंट ऑफ साईं बाबा जी की जो मेन मूर्ति है. एंड दैट पर्सन वाज नॉट देयर. एंड ही सेड, कौन आया था, आप ही तो गए थे. मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा भी होता है. सो गॉड इज दैट फोर्स. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो नो पॉइंट ब्लैकमेलिंग गॉड एंड बार्गेनिंग एंड गिविंग हिम द ल्योर दैट आई विल गिव यू सो मच मनी, आई विल डू so much for others if you answer my wish. So it does not work like that. So these are little first, and it happened with me, like I'm a very normal human, and it's not that, हम सब मिलते रहते हैं. So मेरे साथ ये हुआ है. और मैंने of course आप में से कुछ लोगों को बताया भी था. ऑफिस में मैंने जाके सबको बताया कि कल ऐसा ऐसा हुआ. तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है वहां पे. मतलब ये चीज कॉमन है, बिकॉज देर इज सम सुपर पावर ऑपरेटिंग देयर, एंड समवन हु रियली नीड्स, लाइक दे रियली वांट, एंड दे फ्रीक्वेंसी है ना ये. why does God need to appear in front of us in a human form and just do things for us? Frequency. So work on the frequency. This is what I'm saying. This is the reason sometimes the money doesn't flow very easily and effortlessly. है ना, कि किस उससे आप बहुत प्यार से खर्च कर रहे हो, लोगों पे खर्च करते हैं, किसी पे, जो बिल्कुल सेल्फलेस है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, यू जस्ट गिविंग अ ब्यूटीफुल ट्रीट टू समवन, और यू गिविंग दैट ब्यूटीफुल गिफ्ट टू somebody. So that's a very selfless money, and that multiplies several times and comes to us. Okay, so this is how life is, and money basically is a means to an end. अगर आपको भूख लग रही है, तो पैसा, इस वक्त अगर पैसा है आपके पास, नहीं, उस पैसे से आप खाना खरीद के खाओगे. ठीक है. अगर आपको कोई जरूरत है, बिजली का बिल पे करना है, तो पैसा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन पैसे से आप बिजली का बिल दोगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होती रहेगी हर महीने. So money is the means to an end. So it is that power. This is the reason in Magic Check we are not writing for the money. We are writing money for a specific something. और जैसे वो चीज हो सकता है वो आपकी कल ही आ जाए.
हो सकता है कल ही कुछ ऐसा हो जाए कि जो जिस चीज के लिए आपने आज मैजिक चेक भरा था वो कल ही मैनिफेस्ट हो जाए। तो इमीडिएटली डोंट वेट फॉर द चैप्टर टू कम अगेन, नया चेक बना लो, ठीक है। और उसी तरीके से सो प्रैक्टिस वाइज हमको क्या करना है कि चेक में हमने पूरा भर के हम उसको हाथ में पकड़ के दोनों फिंगर्स से, बिकॉज ग्रैटिट्यूड की पावर हमारी नर्व एंडिंग से फ्लो होती है जिससे हम चेक को पकड़ रहे हैं। सो चेक को पकड़ के हमको उस चीज के लिए जिसके लिए हमने पैसे भरे हैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, और 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है आंख बंद करके कि कितना अच्छा लग रहा है आपको वो चीज फाइनली आ गई या जिस भी चीज के लिए आपने किया था, ठीक है। और दिन में 2 बार और, ये तो पूरा सुबह हो गया विजुअलाइजेशन वाला, दिन में 2 बार और, मतलब टोटल 3 हो जाएगा बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो दिन में 2 बार और उस चेक को निकालना है और उसको फील करना है, थैंक यू बोलना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए आपने अमाउंट भरा था। And that is what it becomes 3. And then keep this check at a place जहाँ अपने वॉलेट में, अपने विजन बोर्ड पे, रेफ्रिजरेटर पे मैग्नेट से लगा दो, या कहीं पे भी आपको रखना है अपने पर्स में रख लो। एंड एज एंड whenever you know like जब वो चेक दिखे उसके लिए इमेंस ग्रैटिट्यूड, पैसे के लिए नहीं, उस चीज के लिए जिसके लिए आपने इसको भरा था, ये करना है हमको प्रैक्टिस, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज करनी पड़ेगी पैसे के साथ में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिसेस वाइज मॉर्निंग में काउंट माय ब्लेसिंग्स, जिसको हम 10 ब्लेसिंग्स लिख के वी रीड देम एंड देन वी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू आउट लाइड 3 टाइम्स। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, पत्थर लेके पूरे दिन भर में अच्छी अच्छी चीजें सोचो and then see what Santa Claus brings for you. So it's a Christmas Eve today and it is so happy and everywhere it is so much festivity. And Santa Claus is that force of the universe, right? So Santa Claus wants to brings in a lot of things for us this new year and the next year 2024 and in the last week of this. So make it very happening. Saturate now going forward 25 से लेके 31st तक खूब सारा ग्रैटिट्यूड करो, जो एफर्मेशंस करो, जो भी ऐसे करना है। दैट फेस्टिव टाइम हैज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेटरी एनर्जी इन द एनवायरमेंट, सो यूटिलाइज दिस हॉलीडे सीजन एंड दिस सेलिब्रेटरी एनर्जी टू क्रिएट थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज पूरी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में, अभी पूरे प्लैनेट अर्थ में अभी हर कंट्री क्रिसमस मना रही है, हर कंट्री का हॉलीडे सीजन है। There's happiness, there's festivities, there are celebrations, people are making Christmas tree, there's Santa Claus everywhere, and it is so much fun. That energy, capture it. Capture that energy and write more blessings, do more of scripting, declarations, whatever it is that you want to do. The celebratory energy with क्यों हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लिखने को बोलते हैं? Because of the energy. क्योंकि सुबह की energy clean, pure and बहुत strong होती है। तो आप में और यूनिवर्सल फोर्सेस में गैप्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए सुबह की पावर 10,000 टाइम्स मोर होती है। बट अभी प्लैनेट अर्थ पे हर जगह देयर आर सेलिब्रेशंस हैपनिंग। क्रिसमस इज वन फेस्टिवल दैट हैपेंस everywhere all over the globe. There's not a single country that doesn't celebrate Christmas. So let's be in that celebratory mode and in that joyful mode create things in our life. And that's what we need to do. So till 31st, you will see everything, whether it's a mall, a street, everything is so well lit up. The celebrations have already begun towards saying bye-bye to this year and welcoming the new year. And we have multiple reasons to say bye-bye in a very high frequency for this year. And more deeply are we going to say bye to this year, more we are going to receive. Because first, when you give gratitude, the universe says, have more, Hannah, and tathastu to everything that we've said thank you to. So that is the kind of energy we need to create. So celebrate your life. We have a beautiful 1 week left. And starting today, of course, is the Christmas Eve. Celebrate. If you want, you can make a tiny Christmas tree in your house. That will remind you of that life is a celebration. And that Christmas tree runs till about first week of January. Or whatever it is, like if you want to, that is. Of course, nothing is a compulsion. But yeah, be in that celebration mode. And welcome this new year in a very beautiful way. Yeah, so thank you. We go to this other book, which is The Hero's Journey, The Hero by Rhonda Byrne. And so yeah, let's get reading. And then Deepa Gupta, are you reading? Yeah, ma'am. Okay. Yeah, please start reading. Thank you, ma'am. Good morning, everyone.
लेने बीच ले. All of a sudden, you are presented with guides and the universe provides. It's just like the great saying, when the student is ready, the teacher will appear. Yeah, it Master, always works like that. Master, एक सेकेंड दीपा. yeah. सो अगर आपको कभी भी कोई चीज चाहिए, आप असमंजस में हो, व्हाट शुड आई डू, you know, like I need some kind of a this or need to read on this, you will see when you are ready, the teacher will appear. कई बार कोई YouTube वीडियोस भी अगर आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि कितने अच्छे वीडियोस हैं, ये पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले यू वर नॉट रेडी, योर माइंड वाज नॉट रिसेप्टिव, यू वर नॉट देयर. अगर टीचिंग्स भी किसी की पहले अगर आती हैं आपकी जिंदगी में, इसका मतलब है यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर अ फर्टाइल ग्राउंड. नाउ इज द टाइम टू सो द सीड्स एंड दैट विल रीप द हार्वेस्ट. You know, like it will definitely become harvest, a huge reaping of the harvest would happen, bountiful harvest जिसको बोलते हैं. जब आप उसके लिए रेडी हो, फर्टाइल हो, तब जाके टीचिंग्स आती है. सो देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर ग्रुप आल्सो, नो, आई मीन लाइक 900 almost. But why are others not being able to come? Because the land's not fertile right now. People जो ready हैं वो सुबह आ जाएंगे, but वो YouTube पे भी सुन पाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि उनका land fertile हो गया है. ठीक है? But the people who are not able to come only, and something is pulling them back. Maybe their busy schedule, maybe, believe me, no one has a more busy schedule than me. I know my life. Okay, I know that what all commitments I have, you know, my job, something else. It is not being a life coach or anything. And like even on holidays, I'm logged in, you know, like even today I need to make a PPT and, you know, multiple things that's happening all the time. So always looking at the time, timing the things that, okay, till now I'll do this, then I'll do this, then I do this. So it is always like that. But when you are ready, the teacher will appear. That's very, very clear, you know, that when the student is ready, the teacher will appear. That's what it is like. So we don't need to worry about anything. Mastin Kip, if you make a full commitment to your dream, doors will open. I actually think that doors have always been there, but when you fully commit, you see them. Yeah, it's as simple as that. You want to start a business and you're looking for the right whatever, or some business partner will come, or you will find some investor who will come and say that I'm ready to invest money in this business. And that is what your, you know, you needed that most at that point of time, कि आपको अपना business शुरू करने के लिए एक investor चाहिए था, और वो बस आ गया, वो हो गया, है ना, अपने आप. जैसे कल डॉक्टर शेल्तविना इज अ नेम, प्रिया. So Yes, ma'am. Shelvina. Shelvina. So she had shared with us yesterday, no? Shelvina, agar group mein aapne uska experience padha hai. She said that she always wanted to, she with her husband wanted to start a hotel, wanted to own the hotel. So he was working in a hotel for 15 years. And then she mentioned that we wanted कि हमारा अपना खुद का hotel हो, like residential hotel. फिर उसने यू नो लाइक शी डिड ऑल दीज प्रैक्टिसेस. और इनिशियली जब हम यूट्यूब पे नहीं थे, आई रिमेम्बर दैट प्रिया हमेशा बोलती थी कि शेल्विना को ना हमको रोज रिकॉर्डिंग्स देनी पड़ेंगी, बिकॉज she is so much hooked on to it, and you know, like she's really seeking the teachings and the tools. So we would give recordings to her every day. एक तो हम उनको रिकॉर्डिंग भेजते थे, और एक दीपा जो पढ़ रही हैं उनकी सिस्टर इन लॉ को देते थे, जो लंदन में है, कहीं पे यूके में रहती हैं. तो उन दोनों के टाइमिंग्स में बिल्कुल मिडनाइट, पोस्ट मिडनाइट हो रहा होता है इस टाइम, हमारे सेशन के टाइम. और हम यूट्यूब पे तो थे नहीं, रिकॉर्डिंग्स हम देते नहीं थे, बिकॉज उस वक्त यू नो लाइक वी वर जस्ट डूइंग द मॉर्निंग सेशंस. रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब तो हमने इस मई से शुरू किया है, मई 2023 से. उसके पहले वी डिडंट हैव एनी प्रोविजन कि अगर आपका सेशन मिस हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, you know. So then we started on the YouTube and then it was okay. But तब इन दोनों को recordings हमारी लगातार जाती थी. You know, I think गीता नाम है उनका ना, दीपा? गीतांजलि मैम. हाँ, गीतिका गीतांजलि, शायद, मेरे गीतिका. उसमें गीता के नाम से ही फेर है. सो गीता और शेल्वीना, इन दोनों को हम लगातार रिकॉर्डिंग्स देते थे, बिकॉज दे वाज सिटिंग ऑन अ हेड लिटरली. प्रिया मुझे यही बोलती थी कि लेट भी हो जाता है, एक दिन नहीं भी देते तो एकदम से, एंड गीता वुड गिव टेक्स्ट मी दैट आप वो 3 दिन से रिकॉर्डिंग नहीं आई है, बिकॉज ऑल ऑफ अस वर सो बिजी. और रिकॉर्डिंग ऐसे निकाल के भेजना, एक्सट्रैक्ट करना,
So we would not be able to do that. But they literally were calling us and literally, कि हमको recording चाहिए. उस attitude के साथ में, I mean, she's in such a short span of time, Shalvina could buy a hotel, which जिसकी pictures उन्होंने कल हमको भेजी थी. ठीक है, उन्होंने वो होटल खरीदा, एंड ह्यूज रेजिडेंशियल होटल, एंड विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और अभी अभी वहां पे 100 लोगों की कॉन्फ्रेंस बुक हुई है उनके होटल में. सो वो तो खैर ये क्योंकि मैनिफेस्टेड है. व्हेन गॉड हैज गिवन यू समथिंग, आपने क्रिएट किया है, उसका सक्सेस होना तो मतलब इट्स done deal, definitely it's going to be successful because it was a gift to you from the universe. So that gift has to bring a lot of success and growth in our life. So this is how the doors opened. No, someone came up to them and said that उनको पहले कहा कि उसको रेंट आउट करना है होटल को, और फिर ये अपना काम करना शुरू कर रहे हैं वहां पे. आउट ऑफ द ब्लू someone appears, है ना. So universe, anything can happen in, universe will bring people, situations, circumstances to have our dreams answered when we are in alignment and in high vibrational frequency, and when we are sitting on that creator's chair. So you have to be sitting on that chair. Imagine some nice golden chair where you're upset about something. Come back and sit on that nice golden big chair, which is the creator's chair, and now create that situation which has something opposite has just happened. That's why you're upset, right? कुछ हुआ है ऐसा, इसलिए आप अपसेट हो. क्रिएटर की चेयर पे बैठो. इस चेयर पे बैठ के आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और ये एक इमेजिनरी चेयर है ना, जिसपे हमको बैठे रहने की जरूरत है. कोई बात नहीं, आप स्लिप होते हो नीचे, वापस उठ के बैठ जाओ, doesn't matter. And now create that situation that you most want, because the moment you make that commitment and that decision that I am doing it no matter what, and then universe says, wow, कितनी जिद्दी लड़की है, जिद्दी आदमी है, जो भी है, इसको सब कुछ दे दो जो इसको चाहिए. Like that is how it is. So that's what Master Kip is saying here, that the doors of the universe will open the doors and doors in front of you, provided you want it bad enough. Hanji. Deepa. Deepa ma'am, you're on mute. Anyone else wants to start reading? Unnati, you want to start reading? She's on mute actually. मैम आप unmute करें अपने आप को, दीपा मैम. हो Yes. गया? हाँ आ हाँ रही है हाँ, अब हो गया. हाँ. Okay. G.M. Rao. Doors opened when my commitment became a surety. I can quote the instance when we bid for the Delhi airport. We set out to build the world's best airport. This was our dream. The project attracted the world's best and the biggest airport developers, and the bidding process was highly complex and exhaustive. We prepared ourselves with some of the most competent partners, very knowledgeable experts, and a very motivated bidding team. We visited modern airports across the world and learned from them. We overcame every obstacle in the way and emerged as the only technically qualified bidder. But our journey did not end there. The bidding process had to overcome legal challenges, which went up to the highest court of the country. The resulting delays made the stiff timelines even worse. It was to be the fifth largest airport in the world and an extremely complicated environment with 58 departments to coordinate with. Once we started the project, things fell in place. Nearly $2.5 billion was raised in financing, and more than 40,000 workmen and engineers from over 27 countries came together to finish the project in a world record time of 37 months. The universe blessed our commitment and dream
to build the best airport in the world and smoothed the path to achieve our goal. Today, we are the fourth best among 199 airports. When we see someone follow their dream, we can get the mistaken idea that they must have had privileges to be able to do it. In fact, it happens the other way around. It's when you decide to take the leap into the hero's journey that the privileges come. When you commit to your dream, it's as though any person who can help you with your dream is summoned by the universe to be right there for you with everything you need at the exact time you need it. Yeah, this is so beautiful, and you see the effort behind making one Delhi airport. So मुझे वो आइंस्टीन की बात याद आ रही है, अल्बर्ट आइंस्टीन की, wherever you stand, you're standing on the shoulder of the giants. Never forget that there are lots of people behind you involved in making you be at this place right now, isn't it? एक घर में भी हम बैठे हुए हैं, हम सब अभी अपने अपने घर में हैं, या मे बी होटल रूम्स में होंगे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, या पार्क्स में हैं. हमने बनाया है क्या? नहीं ना. हमने बस पैसे से उसको खरीदा है या हम उसका रेंट दे रहे हैं. ठीक है, हमने तो नहीं बनाया. इतने सारे प्लम्बर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इलेक्ट्रिक केबल्स निकले हैं इस घर में, ब्रिक बाय ब्रिक किसी ने रख के इसको बनाया है. दरवाजे, खिड़की, ये सब कारपेंटर्स ने बनाए हैं. बाथरूम के टाइल्स लगाए हैं, फॉसेट्स लगाए हैं. देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व. द फर्नीचर हमारे घर में है, वो कहाँ कहाँ से कारपेंटर्स ने बनाए हैं. गैस पाइपलाइंस निकल रही है, हम बस गैस ऑन कर देते हैं तो वो गैस का जो दैट चूल्हा, बर्नर्स, वेयर इज इट मेड? वी हैव नॉट डन इट. We've not done anything. We just paid money and we so comfortably live in this house wherever we are. Imagine there are so many people behind it, to actually think and say thank you and feel thank you and gratitude for each one of them who are making the life so comfortable for us. Okay, that is imperative. That's our duty. And when we look at the Delhi airport, of course, is saal abhi few days ago, Bangalore ka Terminal 2 has become the best airport in the world. But yeah, for many, many years, ये फोर्थ बेस्ट था दिल्ली एयरपोर्ट इन टर्मिनल 3. अब ये टर्मिनल 3 वहां पे लिखा हुआ है, टर्मिनल 3 पे जब आप जाते हो, कि इट इज सेकेंड बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, amenity wise and even otherwise. Like it's a beautiful, huge airport, so well organized. And see how GMR made it. मतलब he said that it was such an exhaustive process, और फिर भी जो बिडिंग होती है, फिर वो कोर्ट के पास गई, फिर वहां पे डिलेज होने लगे. 27 कंट्रीज के इंजीनियर्स ने दिल्ली एयरपोर्ट को बनाया. ठीक है, एंड सो मैनी 40,000 पीपल, सो मैनी बिलियन, सो मच बिलियंस ऑफ मनी बीइंग पुट इनटू दैट दिल्ली एयरपोर्ट. So every time now we are walking into that airport, we need to remember and say thank you to GMR for being that one person who could just rise above all the ashes and like a phoenix, and how he created that. And वहां पे तो हर जगह GMR 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 लिखा हुआ है. मतलब एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के पूरे आसपास जो एरो सिटी है वहां पे हर जगह GMR के. सो हर बार अब मैं देखती हूँ, जब से हमें तो पता नहीं था कि इनका इतना मतलब हीरोज जर्नी और इतनी टुमल्टस जर्नी थी, और इतने बड़े विक्टर हैं, ये तो हमको नजर आता था बिकॉज हर जगह GMR लिखा हुआ है. बट हमें नहीं पता था कि वो हमारे अपने GM राव हैं चेन्नई से. So he's like really reached where, I mean, like what it takes to reach, he's sharing with us. So maybe इनके कदमों पे चल के अगर हम चलेंगे और इस तरह का कमिटमेंट हमारा होगा, तो डेफिनेटली द यूनिवर्स इज गोइंग टू आंसर एवरी प्रेयर ऑफ आवर्स, नो मैटर हाउ बिग इट इज. बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ प्रेयर अगर आंसर हुई सिर्फ उनके कमिटमेंट के कारण, सो यू कैन इमेजिन दैट इनके मुकाबले हमारी तो छोटी है प्रेयर्स, है ना. मतलब हमारे जो गोल्स हैं, हमारी विशेज हैं, हमारी ड्रीम्स हैं. And he's so wonderful. I mean, like hats off to this kind of an endurance that he's had throughout in his journey. So फिर Rhonda Byrne बाद में बोलती हैं that when we see someone follow their dream, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ ऐसा पता नहीं कैसे हो गई है, mistaken idea that उनको जरूर privilege होगा. ऐसा नहीं होता है ना. We see Shah Rukh Khan's journey. Did he have anyone in the film industry? No. He's worked hard every day. This is the reason success has not gone to his head. He'll take a selfie with people. उनके जो मतलब वो
जो उनके जितने भी गार्ड्स और सिक्योरिटीज है वो मना करते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, बट ही विल जस्ट गो एंड मिक्स अप विद पीपल एंड ही सेज दैट मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मैं खड़े होके अपने घर के आगे हाय बाय करता हूँ सबको। कहते हैं मैंने इसी दिन के लिए तो इतना हार्ड वर्क किया, इतने लोगों का प्यार है मेरे पास, एंड दिस इज व्हाई आई मीन ही इज नॉट एरोगेंट व्हेन इट कम्स टू अ वेरी हम्बल सिंपल person, like still why, because he's self-made, he's worked for it, and he's constantly still working. He's not a very young person right now. He's had multiple surgeries on his back, on his arm, knees, but then still you see his energy and his dancing moves. I can see the discomfort in his dance moves, now, but then he still does it. It's not, money is not the reason, but it is people's love that is still getting him to do so much more. There are many people who are self-made, and like it's not, and even those जो जिनके mothers and fathers ने business शुरू किए हैं, eventually at the end of the day it is your work only that is going to pay you off. चाहे किसी के dad ने बच्चे को business start करके दे दिया, but ये बच्चा ही तो business run कर रहा है ना. I mean, like he's doing it on his own merit now. I mean, the fathers just started, put the money in that business and left it. Now this person is actually doing it. Like there are multiple this thing that where people get into the family business, but it doesn't mean that like ये इस person की success father पे dependent है. उसने खुद भी तो किया है ना कुछ. He's taken this forward. He's had the right moves and the right action at the right time. Has been in a very good frequency. So that is how it is, like ऐसा नहीं होता कि ऐसे लगता है हमको कि इनके पास तो बहुत amenities है और इन्होंने ऐसे कर लिया. So that is what it's like when you commit to your dream. It's as though any person who can help you with your dream is summoned by the universe. This is how it works. जो इंसान जो support आपको आ रहा है वो universe हमारे सामने लेके आ रहा है, and it will come at the right time, at the exact time that you require, and at the right place. And it just depends upon our frequency, that drive that we have, that fire that we have, the commitment that we have to become the best version of ourselves. Like if you want to talk in front of, like give a lecture in front of 5,000 people with confidence, and you want to build in that kind of addiction, confidence from, your inner being, from your inner self, like it just that as long as you want it bad enough, just do it. So when I travel, everywhere in office, and there's so many students who come and say that we want to talk like you, like we want to have that confidence like you, or want to talk like you. I always tell them that, okay, you start today then if you want to do it. I've also, like I am still becoming. We are never there. We are never perfect, still becoming, getting better and better. But then I always tell them that stand in front of the mirror and give yourself a topic. You can give the topic of your city. Suppose you live in Mumbai. So give yourself the topic of Mumbai and talk for 10 minutes straight about Mumbai into the mirror. And that mirror, the person in the mirror is your audience of 5,000 people, and address them and talk, and slowly, you will see that the confidence start building up, right words at the right time. And then of course, along with that, you can do your affirmation that I have excellent communication skills and I speak the right thing at the right time. Okay, so when you constantly work, so this is how we all work on ourselves. Okay, but as long as you want to do anything bad enough, you should want to do it bad enough that yes, I'm going to be an excellent communicator, and I'm going to inculcate that confidence inside me that I can stand in front of 5,000 people and then hear their applause. Okay, so this is how we, like we kind of make ourselves the best version in any field that we are in. I mean, which is unique to each of us. We all from different fields, but yeah, being the best at where you are is what matters in life, and we don't even have a choice. Okay, we wake up early in the morning and do all our practices, not to have tears in our eyes and not to like become a victim of the circumstances, but to become a creator of the circumstances. That's what we are here for, and by us being that person, we have to touch the lives of so many others around us wherever we are. So as I always say, be that electric eel, that fish that radiates electricity to every person, that comes across this person. So each of us is an electric eel,
So anywhere, wherever we go, you know, we have to touch the life of that person, and that's what matters in our own way. Of course, wisdom is something we need to, you know, कई लोग बहुत receptive नहीं होते about, they think क्या gratitude ये वो, but then अपनी जिंदगी से दिखाओ ना, shine wherever you are, they themselves are going to see all that. So this is how it is, and this is how beautiful life is. So keep creating and keep becoming the best version of yourself, and keep touching the people in your environment, and that's our core. Okay, and thank you, Deepa, for reading. Thank you so Thank much. you, ma'am. And thank you, Priya, for letting me read because I wanted to read. And thank you, Bitty ji, because ma'am, she was the person who has to read She today. gave you the slot. Yeah. It was Anu actually. Anu से गया था मैंने. Bitty ji has given a slot for tomorrow. Okay. Anu Okay. इससे Thank you, Anu, then. barter चलता रहता है. Oh, Thank सही you. है वैसे, कितनी अच्छी Thank बात है ना? Then everybody gets a chance. Yeah, We are ma'am. the Because that team. We are voice the is the team. universe voice that reverberate. जो भी पढ़ता है ना, उसकी आवाज एक यूनिवर्स की आवाज होती है जो reverberate करती है, YouTube पे जा रही है. So yeah, it is definitely a lot of, it's a good thing to actually read. all आप प्रिया म्यूट हो गए. आप कुछ अभी भी आप म्यूट हो, देखो. I thought my मेरा connection जो है ना, it was quite unstable, so I was switching on my hotspot again. बहुत देर तक hotspot नहीं चलता है ना, तो फिर वो off हो जाता है Wi-Fi के साथ, so I was doing that. So मैम, अच्छा. GM कंपनी जो है ना, it was not huge back then. पहले इतना ज्यादा huge नहीं था ये. But now, just see कि मतलब because of the grit only ना, they got that. Otherwise, Larsen and Toubro है, इतनी बड़ी बड़ी companies हैं इंडिया में. Those are the blue chips. That GM was not considered even blue chip that time. But after this project, now after this Delhi Airports project, it got so many projects in the whole country, and even out of India also they got that. So Yeah. now we can come to know now कि how, like, what is the thing behind this particular investment that they have made, and दिल्ली एयरपोर्ट में जाकर ही पता चलता है कि कितना बड़ा है, कितना ज्यादा ह्यूज है. फॉर द पीपल हु हैव, लाइक, आई हैव नेवर बीन टू एनी अब्रॉड प्लेस, तो लगता है ना कि कितना ह्यूज है. इवन हीथ्रो इज नॉट नथिंग इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली Yes, एयरपोर्ट. yes, सो yes. या, इट्स ह्यूज मैम, एक्चुअली. एंड मैं तो जैसे बाहर कई बार गई हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली का एयरपोर्ट दी बेस्ट लगता है एंड आई रियली लव इट. वो इतना इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि मतलब लिटरली आई एम लव विद द एयरपोर्ट व्हेनेवर आई गो अब्रॉड. मुझे वो बहुत सुंदर लगता है. और इतने जब आप कहीं से बाहर आते हो तो योगा के इतने पोजेस हैंड्स के इतने बड़े बड़े ह्यूज बना रखे हैं. मतलब मैं लिटरली मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है दिल्ली जो एयरपोर्ट वॉकिंग पे आके. फोयर है वहां पे भी, एंड इट हैज दैट हिंदुस्तानी टच टू इट, यू नो, योगा के मुद्रास. जब बाहर आते हो, जब अराइवल पे, तब मुद्रास है अलग अलग हाथ के, बड़े बड़े, हाँ, लाइफ साइज. और जब जाते हो तो जो बोर्डिंग गेट्स है वहां पे सूर्य नमस्कार के जो वो पूरे 12 पोजेस होते हैं ना, वो Yes. बने हुए हैं. सो इट हैज दैट इंडियन टच टू इट. एंड यू नो, बहुत सुंदर जिस तरह से बना हुआ है, जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन के जो सारे, यू नो, राजस्थानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और वो सारी चीजें. सो या, देयर इज अ ट्रेडिशन अटैच्ड टू इट आल्सो. एंड या, मैं इट्स अभी मैम बनारस गई थी, तो बनारस एयरपोर्ट भी मतलब वहाँ जो बनारस के ट्रेडिशंस हैं, जो वीवर्स हैं, मतलब इतना खूबसूरत. वहाँ पे ऊपर वॉल पे सारी पेंटिंग्स वगैरह बना रखी जो इंडियन ट्रेडिशन में चलता है, तबला एंड ऑल. तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं अपने इंडियन एयरपोर्ट. ऑल थैंक्स टू जीएमआर. उनको हिकअप्स आ रहे होंगे अभी. Yeah, thank you for sharing. Yes, peaceful, powerful Pallavi. Please share. Good morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning. I loved your name, Triple P. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. I just have a very small sharing. Yesterday, actually, it was not planned. Or normally, क्या होता है vacation के time पे, New Year time and Christmas time, all the hotels are booked and in moment में आप plan करते हो, so it's very difficult to find it. So there is a place called Gandhi Kota. So Gandhi Kota or Gandhi Kota, you can say like that. I don't know how to switch the camera now. Yeah.
No, I no, just you are, show. we are, Acha, you want to show us this place? Yeah. So this is just like the Great Canyon, ma'am. The Great Oh, Canyon place. It's in where Andhra is Pradesh. this? Gandhi Kota? Andhra Pradesh. It's in Andhra Okay. Pradesh. Okay. So we all are here for the sunrise view to see. See, lot of people are there. तो मैं अपना इट्स अ फोर्ट एक्चुअली गांधी कोटा फोर्ट और मैं यहाँ पर अपना अलग से सेक्लूडेड प्लेस में बैठी हूँ आई फिनिश्ड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स नाउ आई एम गोइंग टू डू माय मैग्निफिसेंट डे प्रदीप बोल रही तुम यहाँ पर भी आकर दीप्ति मैम को सुनोगी मैंने कहा मेरा दिन होना ही नहीं है शुरू जब दीप्ति मैम को नहीं सुनूंगी हाउ कैन आई स्टार्ट माय डे और लोग ऐसे हो रहे हैं वो आज चिल्ला रहे हैं कि सनराइज मैंने कहा सनराइज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लोग एवरी डे मैं अपने किचन से बैठ के आई हैव अ वेरी बिग विंडो इन द किचन ईस्ट फेसिंग एंड आई राइट माय काउंटिंग ब्लेसिंग्स स्टार्ट माय क्लास एंड आई सी द सनराइज एवरी डे बट स्टिल देन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड अभी तो विंटर में पानी थोड़ा वो है ड्राई है बट अदरवाइज आप देखेंगे जैसे नाइग्रा फॉल्स होता है it just look like that so all the streams they flow from this straight lines the marks you can see on the stones na so it's basically the marks made by the waterfall and there is a big dam today so yesterday what happened प्रदीप ने बोला कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा है and we have to postpone it for the next weekend so I started writing my practices magnificent outcome and all these counting my blessings giving lot of thanks there is a freak out adventure campaigning theme is there so said कि उन्होंने कहा कि सर संडे का अवेलेबल है बट सैटरडे इवनिंग इट्स नॉट सॉरी फ्राइडे इवनिंग इट्स नॉट पॉसिबल so yesterday was Saturday right so Saturday Pradeep ने बोला कि please आप देखिए try करिए otherwise we have to sleep in our car because we don't have any other bookings and all so after 10 minutes that guy again called from his side and sir बोला कि sir हो जाएगा but it's a small tent you have to manage for one night in that tent and morning you will get the proper tent with AC and attached washroom and all so and on the way ऐसा हुआ कि we were just ऐसे नायरा का बोर्ड देखा I don't know Pradeep always prefers to fill the fuel from Naira pump and it was the last pump in Karnataka and जब उन्होंने पूछा कि क्या कैसे रेट है तो उन्होंने बोला कि दिस इज द लास्ट पंप इन कर्नाटका इफ यू वंस एंटर आंध्र प्रदेश इट इज 12 rupees or 10 rupees more per liter so there we filled our tank and all the things जैसे बोलते हैं ना मतलब इतना कॉमन सा लग रहा है मुझे बोलते हुए कि सब लोग जैसे बोलते हैं ना ऐसे टिक 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 अच्छा ये चाहिए ये चलो ये ले लो अच्छा अभी ये चाहिए चलो ये ले लो टेंट भी मिल गया and my daughter is not with us now she is in Mohali Chandigarh my son is with us he is in 11th तो he enjoyed like anything and छोटे छोटे बच्चे सब उसके एज के रात भर में हम सोए नहीं है रात भर सबकी टेंट से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के सब स्पीकर में गाना बजा रहे कहीं से तमिल गाना आ रहा है कहीं से मलयालम कहीं से हिंदी एंड दे ऑल आर शेयरिंग कोई उसमें से शायद एंगेजमेंट हो गया है सब बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की बातें सुन के आई जस्ट मूव्ड बैक टू माई बचपन का मतलब कॉलेज का टाइम का याद आ गया बट ठीक है मतलब दैट टाइम इट वाज नॉट फॉर अस इट वाज नॉट वेरी लिबरेटेड कि हम ऐसे जा सकते हैं बट फ्रेंड्स के साथ फ्रीक आउट कर सकते हैं बट दैट फेज वाज कम्प्लीटली मेरे फ्लैश में ऐसे वो इमेजिनेशन में आ रहा था एंड होल नाइट प्रदीप मुझे देख रहे हैं प्रदीप बोल रहे हैं मुझे लग रहा है ना हम दोनों सबसे बूढ़े हैं सबसे पहले हम ही टेंट पे आ गए सोने के लिए कोई सोने के मूड में ही नहीं है कैंप फायर कर रहे हैं और मतलब लड़कियों की आवाज आ रही है बच्चे बात कर रहे हैं एंड उसमें कल एकादशी था तो वी वर फास्टिंग तो उसके बाद मैं भी ड्राइविंग की वजह से हम लोग थोड़े टायर्ड थे तो सो गए तो मेरे को मन कर रहा था मैं उठ के जाके उन बच्चों के बीच में बैठ के डांस करना शुरू करूं और बात करूं वो बोलेगी आंटी कहाँ से आ गई बट टुडे डेफिनेटली वी विल एंजॉय इट टू द मैक्सिमम तो मैं सबका शेयरिंग सुनती थी मैंने कहा यार सब लोगों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ कब होगा सो मुझे वो लग रहा था कि जैसे आप बोलते हो ना हमेशा आपको सी बीच में जाना है एंड यू लव टू ऑल दिस विजन बोर्ड पे आपका सी बीच होता है तो मेरा हमेशा नेचर होता है कि मेरे को नेचर में जाना है कि ऐसे जो भी माउंटेन्स है स्ट्रीम्स हैं एंड ऑल दिस थिंग्स
So today they have this rappelling and zip lining. So we will enjoy all those things. I'll post the pictures in the group through Priya ma'am. Thank you so Yeah. much, ma'am. Thank you Thank you so so much. much and have the best holiday, best vacation ever, and Thank you enjoy so a much. lot. And you are not cold if you're sleeping early. You have come on a fun and adventure trip and zip line and things like that. So don't say that. So you don't look like because in these practices you become younger and younger. दीप्ति हाँ दीप्ति मैंने जी। आई वेंट टू Thank you, श्रीलंका ma'am. वाया बैंगलोर, तो बैंगलोर एयरपोर्ट का मैंने अभी अभी प्रिया को भेजा है, वो आई टुक अ वीडियो, अच्छा। तो अभी भेजा, शी कैन Awesome. And सेंड. it's become number 2 in the world. Yes, Terminal 2, but yeah, Terminal 2. Terminal 2, very beautiful, It's ma'am, very, very very newly pretty. built. Yeah. Yeah. So all Air India and Air Asia flights land at Terminal 2 now. Yes. It's actually very pretty. So yeah, thank you, Pallavi, for sharing with us, and enjoy your sunrise. And do whatever prayers you have to do, all the planets and all the 5 elements. I think everything is in front of you right now. So saturate that moment into your life and make lots of moments and memories on this holiday. Yes, And you're ma'am. looking While very writing pretty, today, like a thank you. 20-year-old. Oh my God. Thank you so But much, yeah, ma'am. actually, I'm sure आज everybody जब will लिख vouch. आज जब लिख रही थी ना, तो मेरे को लगा कि 5 एलिमेंट्स हो गया, सन हो गया, माउंटेन्स हो गए, फोर्ट हो गए, स्टोन्स हो गए. अब मेरे को लगा कि द टाइम, दिस प्रेजेंट टाइम, जो भी Now. थोड़ा सा कुछ कुछ चल रहा था दिमाग में. एंड दिस टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग एंड आई वाज लुकिंग एट द राइजिंग सन ना, that realization came. I have been pondering since last few days कि क्या करना है, ऐसे क्यों हो रहा है, what should I do. And that time it gave me the realization, it gave me the answer, this is the thing you should go for. So Yeah. मैंने time के लिए भी आज लिखा, the present time. Yeah, the time is so important. Our country, I think, I don't know how many of us have written blessings for our country. Our country is so beautiful. It has the best nature. It has some amazing places, great food. I don't know what, 60 something dialects, how many languages you can't even count. Every 500 kilometers, the color of the soil changes, the food changes, the color, the dresses that people wear, that changes, the cuisine changes. So it's so beautiful. That's why we say unity in diversity. It is so diverse, and yet we are all one. So beautiful place India is. So I think we need to write more blessings for our own country, and then our country will take us to the world and write more. Like that's all nature, and I don't know, the moment and the time is so important. Enjoy your holidays and have the best one. And yes, do share your pictures. Make a collage and send it so that we can post it. We can have more pictures in one frame. Okay. Thank Okay. you so much, Bye-bye. ma'am. Thank Enjoy you. the sunrise. Then Ramdat ji, please share कीजिए. You'll have to unmute. हाँ, नमस्कार सभी को. हेलो. Yeah, Can you बिल्कुल listen? clear आवाज आ रही है आपकी. ठीक है. एक GMR के जो एयरपोर्ट है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे कि there is a small South Indian temple near our airport in Delhi. Have you ever been to that? You enter that. One day I was very curious कि how come this temple is there. One day I entered there. Then I went to one room. There were about 42 crystal balls, this much big, about basketball size, crystal clear. So I inquired about what is the significance of these things, why have we kept them here. So that time I learned very good thing, that what they do, they energize these balls and keep in the offices in the airport, in all the offices. So that energy of the airport is good. And you will notice that not even a single accident has taken place after GMR has taken over this. This I wanted to share. Oh, this is amazing. आप ज्ञान के सागर हैं. नहीं मैडम, Every time you share with us something, नहीं मेरे Okay, I को didn't बहुत know अच्छा that. लगा जब मैंने देखा ना जाके, तो बोले कि
एनर्जी लो नहीं हो एयरपोर्ट की, इसलिए वो एनर्जाइज करते हैं वहाँ पे, फिर रिप्लेस करते रहते हैं। Sorry to मान के बॉस की Rabin, वजह से भी where is हमारी this ट्रिप temple? उसके इट्स नियर एयरपोर्ट ओनली टर्मिनल व्हेन यू 3 कम फ्रॉम ना, टर्मिनल व्हेन यू 3 कम फ्रॉम व्हेन यू कम फ्रॉम गुड़गांव टुवर्ड धौला कुआं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब तो खैर और बिल्डिंग्स भी आ गई, अर्लियर इट वाज वेरी क्लियर By अबाउट the 4-5 road? years बैक। हाँ, Okay, thank you. लॉन्ग बैक आई वेंट देयर। okay There in the has Aero to share City the ओके, itself location थैंक of यू। that place so that people can in विल the visit. फाइंड Aero इट। City या मैं in the somewhere there Aero City it I is not exactly City. I think I will go back this time and send you the actual yes location of that. so you have a Okay. homework to do because of us Yes. No, not a homework. It's a pleasure. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. And you don't have to call me ma'am. मेरा नाम दीप्ति है. And actually दिल्ली में 3 एयरपोर्ट्स हैं और तीनों ही बहुत सुंदर हैं. So we have Terminal हाँ, 1, which is no, थोड़ा हाँ almost 5. this is terminal 3, जो इसके साथ में है, बिल्कुल हाईवे के साथ में। अच्छा हाँ हाँ that's the international one. हाँ, मैं अब इंडिया आऊंगा, मैं देख के बताऊंगा आपको। ठीक है मैम। हाँ जी. आप अभी भी ऑस्ट्रेलिया ओके, में ही हैं? हाँ जी, इन अच्छा जनवरी वी विल बी कमिंग बैक। अच्छा okay. चलो enjoy your stay ओके, there and thank you so much for थैंक sharing यू, this. Yeah, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, thank you. Yes, Aarti. Good morning, ma'am. Morning. One second. Good morning, ma'am. I'm from Vaishno Devi, and मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली दर्शन किए, and the whole night actually I wanted to show पूरा मंदिर दिखाने का मन था मेरा around 6 o'clock. Can you hear me? एंड एक्चुअली क्या हुआ कि रात को मैं मतलब रात को जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, पूरे टाइम मून ऊपर था, एंड फुल टाइम मैं अपनी पूरी अफर्मेशंस करते हुए गई हूँ। कुछ सेकंड सोचा ही नहीं, कुछ और दिमाग में ही नहीं आया। पूरे 4 घंटे इट वाज लाइक थैंक यू, एंड सारी अफर्मेशंस हुई हैं। Incredible. आप म्यूट हो गए हो आरती। यस मैम। तो मैम इतना अच्छा था, मतलब जैसे लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा हुआ। दर्शन इतने आराम से हुए कि मतलब इनफैक्ट इतनी जगह से हमारे को कॉल्स आ रहे थे कि आपका नंबर आ गया है, आप आ जाइए। हमें लग रहा था कि माता ऐसे क्या बुला रही है, मतलब लिटरली ऐसे हम हंस रहे थे। मतलब लाइक वो था ना कि हैप्पीनेस इज माय हैबिट नाउ। तो लिटरली हम हंस रहे थे इस बात को सोच के कि यार सारी दुनिया तो लाइन में खड़ी है और हमको वहां से कॉल्स आ रहे हैं कि आप आए नहीं अभी तक, आप आए नहीं अभी तक। एंड मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन हमें बुला रहा है। इतनी जगह से हमारे को कहाँ कहाँ से पता नहीं कॉल्स आ रही थी कि आपका नंबर आया हुआ है, आप आए नहीं हैं, आप यहाँ पर क्यों नहीं खड़े हैं। और इतने वीआईपी दर्शन ऐसे आज तक कभी नहीं हुए, एंड दैट टू एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग। दैट वाज लिटरली अमेजिंग। मतलब बिल्कुल एक वो था, डिफरेंट जोन था। या और लोगों को पता नहीं है कि आप यहाँ पे बिजनेस क्लास से आए हो। वो यस वाला एक्सपीरियंस सुनाना जब आप वापस आ जाओगे। अभी तो वहां से यस बोलना आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा, बट you should tell about the practices that you do. My God, we will be blown away with the kind of practices Aarti does, every day. So you यस share that and how the business class thing happened, यस मैम। the एंड gift मतलब from the universe. इतना रश है, बट वी गॉट द हेलीकॉप्टर टिकट्स आल्सो। एवरीथिंग जो जो सोचा था, जो सोचा नहीं था वो मिल रहा है। एक्चुअली जो नहीं सोचा था वो मिल रहा है, सोचा तो कुछ नहीं था। Yeah, But this is how it's life is. This totally is a what your different thing. practices yield you. Yes ma'am, thank you so much ma'am, thank you so much, and it is only because of you. मतलब मैं आती तो हर साल हूँ यहाँ पर, बट जो इस बार का ट्रिप है that is not the same. Yeah, So thank you so much ma'am, thank you so much. that comes from your throne of creation. That's why, आज because you मैंने एक्चुअली created this. आज मैंने एक अफर्मेशन ये भी स्टार्ट करी कि आई एम अ क्रिएटर, आई कैन क्रिएट एनीथिंग।
तो मतलब मैंने आई थिंक 108 टाइम्स अपने उसमें बोलती थी, फिर नेक्स्ट अफर्मेशन करती थी। 4 आवर्स मुझे लगे कंटिन्यूसली, और मैंने कुछ नहीं सोचा। खूब सारी मैजिक डस्ट दी लोगों को और अफर्मेशंस करे थी, और कुछ नहीं कर रही थी मैम। मतलब कुछ सेकंड सोचा ही नहीं जाता अब, और कुछ सोचने को रहा ही नहीं है, तो अपने आप ही नेगेटिव खत्म हो गया। Yeah. नहीं, that's Incredible. Enjoy your trip. Come back safely today, and then tomorrow you can share more about the Yes, ma'am. practices that Definitely, you've done, definitely. because I want to let people know about the practices that you do, which are nobody's ever done the practices the way you have done ever. मतलब दिमाग में ही नहीं आई है शायद उस तरीके से करना, है ना? तो आप आना अच्छे से, कल बहुत अच्छे से शेयर करना अगर आप वेल रेस्टेड हो तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. ठीक Thank है, you so much, नहीं ma'am. तो फिर Thank you परसों so कर लेना। much. Thank you, ma'am. Bye. All right. Thank you. Enjoy, Thank and you, ma'am. thank you for sharing. Thank you. Hi, Sunena. So Hi, we'll take Ritu. last experience as Sunena's today. And then Shamji ka Gana. I don't know whether he's there. Hi, Has to Ritu. be. Hello, everyone. Hello, Ji. It's a सबसे compulsion, he has पहले to तो be. He has to थैंक be. थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स भेजी। दीप्ति यूट्यूब ऑफ कर सकते हैं क्या? रिकॉर्ड गाना, रिकॉर्डिंग। अच्छा मैं गाना चाहती थी YouTube पे, but then I don't know how. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ? अब तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे ऐसे नहीं नहीं, बस अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा ठहरो, मैं उसको ना नॉट स्टार्ट फिर मतलब वो उसी में सेम वीडियो में री हो जाएगा। लेट मी जस्ट फिगर आउट। यस, सो नाउ वी हैव, Sham. यस गुड मॉर्निंग Bye. मैम। गुड मॉर्निंग श्याम जी। एक सेकंड में जस्ट आपको पिन कर एक दूं मैम आपको। छोटी सी बात है, अभी दिमाग में आई थी मेरे, छोटी जी। नहीं है बहुत बड़ी है, कि इतना बड़ा हमारा ग्रुप हो गया है, सेल ग्रुप, हाँ। कि आगे जाके हो सकता है कि हमारे एक कार्ड हो, पूरे वर्ल्ड ओवर जितने होटल्स हो सब में जाओ, अपना कार्ड से पूरा पूरा डिस्काउंट मिल रहा है, कितने रेस्टोरेंट सारे वर्ल्ड ओवर हो, मतलब इतना बड़ा हमारा ग्रुप बन जाए कि बिल्कुल ब्रांड बन जाए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग टाइप। आई हैव SAL कार्ड, जैसे SBI का कार्ड होता हाँ है जी, इंडियन Wow. What a भैया great सेल idea. तो इनको स्पेशल रूम, स्पेशल डिस्काउंट हर जगह मिले, हर जगह घूमने आ अच्छा, Creative जाए। आप idea. DSL के ग्रुप वाले लोग हैं। ये जब हमारे होटल में कदम रखते हैं तो हमारे होटल की सेल 10 गुना बढ़ जाती है जी क्योंकि ये अपनी एनर्जीज लेके आ रहे हैं। स्पेशल प्रिविलेज Excellent कार्ड हो। idea. Tal group brings Midas touch. हाँ, so let us यस all मैम। affirm that we already have that SAL card, because actually हम जहाँ जाते हैं वहां पे things, जैसे अभी आरती ने बताया कि अपने आप चीजें होने लग जाती हैं, so we already have that SAL card with us. तो मैम ऐसा हो ही जाएगा बहुत जल्दी, हाँ, बहुत जल्दी। Yeah, हो ऐसे गया. लाइफलाइन। और आप आज बोल रहे हो तो ऐसा लगता है कि बोले जाओ और हम सुने जाएं। That is always. जब आप इसी पे गाना सॉन्ग गाते है हैं मैम। हमको सेम टू सेम ऐसा ही लगता है। कि आप गाते रहो, हम सुनते जाएं। हाँ, एक्चुअली हम सुनते जाएं, और कहाँ कहाँ से चुन के लाते हैं गाने ना। आज इसी पे है मैम। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूट पी। श्याम जी का डिस्कनेक्ट हो गया है ना? नो डिस्कनेक्ट हो गया। करेंगे वो। प्रियंका तुम हो?
आई थिंक प्रियंका अपने बेटे को पूनम जी छोड़ने गा जा रही रही हैं है। तो आप पूरा कीजिए सर का गाना। पूनम मैम इज मुझे सिंगिंग भी फ्रॉम लग रहा था बिहाइंड। हाँ हाँ पूनम गाइए दीदी पूरा गाइए, पूरा एंजॉय कीजिए। कर पूरा तो रही करना हैं। ही होता है मेर, ना, आधा अधूरा तो कुछ मेरा छोड़ते नहीं है। मेरा तो यही आपसे क्वेश्चन भी ये था कि देयर वाज अ टाइम बिफोर आई गॉट मैरिड, मैं पाकिस्तानी सिस्टर्स के ना पूरे लाउड गाने गाती होती थी, और एक टाइम, और अब शादी के बाद ना Am I still there, नहीं गा ma'am? पा रही। हाँ आइए यस आइए आइए श्याम जी, हाँ मैं आपके पूनम साथ जी गाती एक हूँ। सेकेंड, इज इट ओके? पूनम जी एक सेकेंड, हाँ सुशांत जी का गाना सुन। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। Okay, where was I? Actually, there was a call which was coming. अच्छा नशे सो के घूंट इंस्टेड भर ऑफ, रहे थे आप। हाँ I'll again start. नशे के घूंट पी तो लूं। यस अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। सेम टू यू। थैंक यू मैम। Wow, amazing, sir. या वेरी नाइस। अमेजिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सब थैंक यू पुराने गाने मैम। याद दिला देते हो भैया। प्रिया, हाँ हाँ यस, श्याम भाई। नहीं थैंक यू एक्चुअली सो मच फॉर, अपना मीनिंगफुल सॉन्ग्स। ओल्ड सॉन्ग्स का मैजिक हमेशा ही मैम बना रहेगा। यस बिल्कुल। यस और आई कुछ नो। कुछ नए गाने लाइक कैलाश खेर के और ये सब हैं आज के जमाने में भी, है अरिजीत ना? सिंह लाइक ऑल्सो मैम, अरिजीत सिंह हाँ इज अरिजीत सुपर। सिंह, तो इन लोग के बहुत मीनिंगफुल अच्छे से गाने हैं, सो वो भी अच्छे हैं। एंड So इवन yeah, प्रतीक thank you कुहाड़। so much for starting making Sunday a fun day. So थैंक यू the मैम। fun starts from your music, and this music keeps ringing for the whole day. So thank you for adding so much music to our music is always manifestative. This is what when we were doing our मैजिक तो course, we आप were ही स्टार्ट told कर to, देती हैं। even Tony Robbins would actually say that, whatever it is that you want, like try and add music to it and it will manifest faster. Do dance. There's something called dance meditation. So we're told to do that. Like more you move on the music, quickly. This is the reason I had posted that song of Shah Rukh Khan yesterday. That was one of the songs that we were told to hear in our sessions constantly. So, which is of एंड course. दीप्ति राजन सर एक करवाते थे ना गा 1.5 के मिनट बताना का, कौन भागो सा भागो सॉन्ग भागो भेजा भागो। था आपने। हाँ वो प्राइमिंग कराते हैं उसको, प्राइमिंग बोलते हैं। भागो Priming, भागो yeah. इज दैट एनर्जी दैट वी नीड टू क्रिएट, जो हमने मिरेकल मॉर्निंग में हेल एंड रॉड की बुक से भी बताया था ना, सेवर्स का सारा ई yeah. एक्सरसाइज। So it says that, increase your heartbeat and take it to about 130 to 140 beats per minute. Yeah. Even if it is for just 30 seconds, early in the morning as one of the first things. So इसीलिए वो savers में E added था that, just Okay. jump, or you can just do your jumping jacks or something that elevates your heartbeat early in the morning. After that, of course, we can do our usual set of workouts once we are done with the sessions, but just 30 seconds. So Rajan sir भी वही कराते थे। Yeah, that That was very good. टोनी रॉबिन्स भी हमेशा कराते थे, याद है इस हमेशा कराते हैं हाँ, उनका तो हमेशा। every 15 minutes, like 1 minute के लिए we need to actually jump, Yeah. dance, move our hands, legs, and Mm. just keep doing something, and Yes. the music gets played from behind. The So midnight also we always, हमें लगता ही नहीं yeah, होता कि आप midnight में हाँ सेशंस कर रहे हैं। he doesn't let us sleep. उनके क्लासेस भी बहुत लंबे होते हैं ना। टोनी रॉबिन्स तो स्टार्ट्स एट इंडिया टाइम शाम को, अगले मतलब दोपहर को, और अगले दिन रात को 3:30 बजे खत्म होता है, या कभी कभी वो 1:30 AM पे शुरू होता है, and it will end at 2 PM in the afternoon, and there is no scope, like none of us even feel like eating that time because the sessions are so engaging. So yeah, so thank you Shamji for adding that music zest to our life. And थैंक्स टू यू मैम। every Sunday everyone looks forward, not just me, everyone looks forward to
having you on board for your song. So thank you so much. Thank you. And Bye-bye and have a beautiful Sunday and wish you all a very, very Merry Christmas Eve. Celebrate and do everything that you want to. There's so much celebration and colors in the air. There are lights and sparkles in the air wherever you go. So yeah, enjoy thank that. you. Have your rum Thank cake. you, Hi, Bye, ma'am. ma'am. lucky Have a great Priyanka. Thank you, ma'am. Thank you. And let the Bye. children Thank you, in the ma'am. Thank you family so make much, a small ma'am. little Christmas tree. Let all the children in the family make a small Yes, little. ma'am. Definitely today I'll make. Okay. Acha, Wow, chalo. what Thank a you so much. song. Bye-bye. Beautiful Sunday. See you all Thank you.